Morning, everyone. Good morning. I hope you all can hear me and see me. Good morning. Good morning. This is the last session for the week. Let's just wait for Shivangi ma'am to join in and then we are good to go. I hope you all joined yesterday as well because we made a good profit and apparently 2x, 3x was a call, but we booked the profits when it was 2x almost. So that's the update of the yesterday's expiry. Good morning, Shivangi ma'am. I hope you can hear me. करेक्ट मयूर जी आई गेस आपने कल लिखा था कि आप एंटर नहीं कर पाए थे नो वरीज वी हैव just give me a second we have a census expiry today so do join on time Shivangi ma'am I sent you an invite to join in on stage please join guys I hope I'm clearly audible and visible Hello, hi. Anuj, you're totally audible but not visible. Okay, I'll just try to sort it out. Screen show नहीं हो रहा वीरेंद्र जी हम screen share नहीं कर रहे हैं अभी. So let's start the session and get on with it. Morning everyone, my name is Anuj Sharma. I am the community manager at Motilal Oswal. You see me daily hosting these sessions with our different experts. Yesterday we had a Nifty expiry with a Nifty Queen and we booked profit and we saw momentum of around 25 to 30 points. जहाँ पे हमने profit book किया but apparently it went till during the session it went till 135 and we initiated 3 BTSTs. We'll give you an update on that. For the people joining in for the first time, the morning session focuses more around stocks, so feel free to ask your queries. We'll be happy to answer them. And जो हमारा afternoon session होता है, that focuses more around derivatives. So since it's Friday, we'll be focusing our Sensex expiry, focusing on Sensex for the Sensex expiry with our Sensex king, Mr. Madan Mundada, in the afternoon session. शिवांगी मैम आई गेस वी आर ऑल सेट कल इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था बिकॉज मार्केट में मोमेंटम था आज हो गया सो यू कैन शेयर द स्क्रीन एंड वी आर गुड टू गो Absolutely. Thank you so much, Anuj. You can fix your camera till the time, and I will take over. So we've seen that Nifty was on fire yesterday. It touched a fresh all-time high, and we've seen that bulls have made a very strong comeback. आज के सेशन में ओपनिंग थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग जरूर है बट कल के एक शानदार 470 पॉइंट्स मूवमेंट के बाद इतना थोड़ी बहुत हेल्दी है प्रॉफिट टेकिंग बट ऑफ कोर्स we are holding on above 25,300 which is positive so we'll watch out for this level 25,300 एक इम्पोर्टेंट लेवल आज के लिए रहेगा अगर ये उसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो हम नेक्स्ट वीक भी पॉजिटिव स्टांस को प्ले आउट कर पाएंगे और एज वील वेट फॉर सम कंसोलिडेशन बट ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत पॉजिटिव है and all the derivative and technical indices are now showing positive signs put call ratio भी 1.44 पे आ चुका है which basically means put sellers अपना पोजीशन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं मार्केट में यानी कि वो मार्केट को जल्दी से गिरने नहीं देंगे इंडिया which is also cooled off which indicates that bulls को पूरा एक pavement मिल रहा है to move and to scale upwards. Also, if we look at some of the heavyweights, that those are also performing. कल हमने देखा कि Reliance में बहुत अच्छा एक breakout देखने को मिला एक short covering move थी Reliance में which led the markets tanking high. So overall, Reliance is still holding, which is why हम Nifty में ज़्यादा यहाँ पे एक fall नहीं expect कर रहे हैं. So it's just mainly profit booking at these levels. So that is completely okay if it holds above 25,300. So that is your support for the day. And upside हम expect कर रहे हैं 25,500 के levels, right? Okay. Let's talk about Bank Nifty. यहाँ कल काफी सदियों बाद move हुआ है ये index और outperformance से बाद बाहर आया है. कल एक प्रीवियस हर्डल जोन को सरपास किया आप यहाँ देख रहे हो इसका 5170 का एक बहुत ही क्लस्टर जोन बना हुआ था जो मल्टीपल टाइम्स ये नहीं क्रॉस कर पा रहा था और कल हमने देखा कि बहुत डिसाइसिवली अच्छी तरह से इसने
अच्छे क्लोजिंग दिए हैं उसके ऊपर. So today also we are expecting this positive move to continue, but of course कल के बहुत अच्छे रैली के बाद कल हमने देखा almost 800-850 points move हुआ है बैंक निफ्टी. So उसके बाद हम थोड़े बहुत consolidation expect कर सकते हैं, but overall trend is positive. So buy on decline for both Nifty and Bank Nifty. Of course we'll discuss Sensex as well. बैंक निफ्टी की अगर हम लेवल्स की बात करें यहाँ पे तो 51,500 will be your लक्ष्मण रेखा. That is the support to watch out, and upside 52,250 is what we are looking at. तो ये दोनों आप लेवल्स को ध्यान रख सकते हो. Yes, Anuj, you're now visible. Okay, let's quickly look at Sensex क्योंकि आज Friday है, last trading day of the week, and Sensex expiry है. And we are expecting that जो कल के move हमें मिला वो यहाँ पे कहीं ना कहीं continue होगा. Overall markets के Nifty के cues ले सकते हो आप for Sensex, because Sensex and Nifty move in a ratio of 3.37 and it has a very high correlation itself. So अगर हम Sensex की levels की बात करें यहाँ पे तो पिछली बार 82,700 was a resistance zone, which was acting as a hurdle for quite a long time. But अब हम वो level को support बनते हुए देखेंगे. So 82,700, which is a very close level right now, but that will act as a support for the day to play out the expiry move. And जो upside है 83,250 और फिर 83,400 तक के लिए हम expect कर रहे हैं. So these are the levels to watch out for Sensex. Buy and decline करनी है, and strikes अगर कुछ होगा radar पे so obviously we'll tell you. अगर strategy कुछ है तो भी we will tell you. Right? Okay. Now quickly let's try to understand कि stock specific क्या आज move हो रहा है. Overall अगर आपको market से क्यों लेना है तो निफ्टी के 25,300 levels को watch out करना पूरे दिन. That will help you to gain insight and actionable for the day. Okay. कल हमने कुछ stocks की बात की थी. As far as I remember, it was Bajaj Auto, जो कि आज भी हम देख रहे हैं कि it's on the higher zone, और आज पे भी हमने देखा 11,900 zones के आसपास उसने एक high मारा है. Right, so this is also positive, up by 1%. Right, okay. Anuj, can you quickly just tell me which stocks to cover first, and then फिर हम questions पे. Sure. So I guess ma'am, we did share Century Textiles, Apollo Hospital, and Bajaj Auto as our BTST. All right, Century Textile is flat right now. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि flat है. ज़्यादा कुछ यहाँ पे हम movement नहीं देख रहे, but overall 2,700 के support से हम इसको देख सकते हैं, right? And we discussed Bajaj Auto, which we have of course mentioned. Apollo Tire is what I think question था किसी का, so we had discussed, but इसमें कोई view नहीं था हमारा. So yes, this is what we had discussed. And ma'am, HUL, HUL, it was also given as a BTST. Then we can move on to stock queries. Okay, HUL, as far as I remember, It's हमने 2L. नहीं दिया था. Yeah, because we don't have a positive view yet on this, because it's Ma'am, H2L, not AL. HUL. Okay, yes. Hindustan Unilever पे हमने view दिया था, and right now FMCG stocks are moving flat. The stock is also near about yesterday's zones only. तो यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत wait कर सकते हैं. Overall stock is good, but थोड़े बहुत market से हम देख रहे हैं कि range bound वाली sense आ रही है. तो सारे ही sectors पे वो एक move रहेगा जो हमें देखना है. Of course, for intraday perspective, I'll just quickly tell you all a few stocks which are looking good. तो एक तो of course Bajaj Auto है, which you can play out, which you can continue. कल के profits के बाद भी आप इसको hold कर सकते हो. One is
Of course, national aluminium जो कल भी काफी अच्छा लग रहा था, and today also it's moved by around 2%. So this stock is expected to again move to 190 levels. तो 190 के लिए आप नैल्को को देख सकते हो. This is one positive stock. बाकी हम देख रहे हैं कि कुछ मेटल स्पेस में थोड़ी बहुत रिवाइवल है, बट अगेन बिफोर यू ऑल आस्क एनी क्वेश्चंस, मेटल्स पे बहुत ही वॉलेटाइल मूव रहता है और बहुत दिनों के बाद रिवाइवल यहाँ आ रहा है. स्टॉक्स लाइक एनएमडीसी, सेल, वेदांता एंड ऑल ऑफ दीज रिलेटेड पैक्स एज वेल. टाटा स्टील भी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक 12 हफ्तों के बाद इसमें एक थोड़ी बहुत रिवाइवल देखने को मिल रही है. सो we'll my view on these stocks will be wait and watch, क्योंकि मुझे पता है आज मेटल्स रिवाइव हो रहा है तो काफी क्वेश्चंस आएंगे. So I'm just answering all of them at once. कि अभी फिलहाल 2 महीनों के बाद हम इसमें एक थोड़े बहुत मूव देख रहे हैं. So we'll have to see if this is sustainable, because पूरे एक 2 महीने के डाउनटर्न के बाद हम ऑलमोस्ट ऑल दी स्टॉक्स में देख रहे हैं कि थोड़े बहुत मूव है. तो वेट एंड वॉच करना है. अगर ये सस्टेन करता है, होल्ड करता है, तभी हम इसे बाय करेंगे. इट्स बेटर टू हैव अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड ऑलवेज देन टू बी सॉरी, राइट. मयूर जी इज सेइंग मैम कल 25-250 का प्रीमियम 4000% इंक्रीज हुआ था. ओके, yes, thank you so much, Mayur ji. Okay. I think we discussed the index setup. Quickly, मैं आपको एक Sensex के strategy point of view में भी एक कुछ आपको बता देती हूँ. Overall range bound move हम expect करें, but remember overall positive view है हमारा long term का, and expiry के दिन भी ये play out होगा. VWAP of the week is trading above the current prices. So that will clearly indicate that bulls abhi bhi action mein hai, and we can expect a range bound to positive move here. So 82,800 is what Sensex is trading at. So I'll just quickly check the premiums agar kuch favorable hai. Okay, so what we can do is हम एक butterfly spread बिठा सकते हैं. I know it's a new term maybe, but I'll explain it. So butterfly spread की strategy हम क्यों करते हैं? It's basically we are wanting to capture the upside move, but हमें safe भी रहना है, time decay का benefit भी लेना है. So that is why we are selling 2 call options here and buying 2 call options here. So यहाँ पे क्या होगा कि it's better than bull call ladder spread, क्योंकि bull call ladder spread में हमारे पास एक selling का जो leg होता है उसका risk और बढ़ जाता है. But in butterfly spread 2 calls are bought and 2 calls are sold. तो इसलिए हमारा जो risk है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा offset हो जाता है. So what you can do is you can buy 82,900 का कॉल, राइट. 82,900 का कॉल आपको एक लॉट खरीदना है, एंड देन यू हैव टू सेल 2 lots of 83,100 call option. So and with that you have to buy 83,300 का एक कॉल ऑप्शन. तो ये पूरा स्ट्रैटेजी आपका 20 पॉइंट्स के cost में बैठेगा, and the maximum reward that you can expect here is round about 1 second. Maximum reward यहाँ पे हम around 180 points का expect कर सकते हैं, but we are not expecting such a move here. तो मतलब इतनी ज्यादा एक रैली नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे. सो दिस स्ट्रैटेजी विल प्ले आउट वेल, क्योंकि कल के सेशन में काफी अच्छा रैली देखने को मिला है. सो 82,900 कॉल इज व्हाट यू हैव टू बाय. 83,100 को आपको 2 लॉट्स सेल करना है, और 83,000
300 कॉल ऑप्शन को बाय करना है. So ये अपने स्ट्रेटजी आपको 20 points के कॉस्ट में जाएगा. Avinash is also put check those as well, right? Okay. तो ये स्ट्रेटजी आपको ऐड करना है एंड लेट्स जस्ट टेक अप स्टॉक क्वेरीज, क्योंकि कल के एक सेशन में हमने नहीं ले पाया स्टॉक क्वेरीज बिकॉज मूवमेंट इन निफ्टी वाज वाइल्ड येस्टरडे. आग लग गई थी कल तो निफ्टी में, बट यस आज let's just look at a few queries. I guess we can start with PFC. All right. PFC has been witnessing some sort of profit booking at these levels, और इस levels पे conviction नहीं आ रहा है. So you can wait and watch. Ma'am, your target for Morpin Lab. Sorry? Your target for Morpin Lab. PAM. Okay. आपको अगर seriously इस diagnostic space में अगर जाना है, so I would definitely tell you to look at Divi's Lab और IPCA Lab for that matter. Divi's Lab भी काफी positive है and IPCA Lab भी बहुत अच्छा setup है इसका. So if you want to go for pharma diagnostic labs, so I would definitely say look at these good names. Divi's Lab is much better than the other names. Okay, so Reliance momentum बहुत कम है यहाँ पे, so that is why इसका aftermath देखने को now getting ready for 3000 levels. So आप definitely इसको आप देख सकते हो. You can either enter अगर आप एंटर करना चाहते हो कैश में या फ्यूचर्स में वो कर सकते हो, बट ऑल्टरनेटिवली आप एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के थ्रू भी एंटर कर सकते हो. बट रिमेंबर इट शुड बी ऑप्शन स्ट्रैटेजी, नॉट अ नेकेड ऑप्शन बाइंग कॉल, बिकॉज थ्रू करते हो तो आपका रिस्क जो है काफी मिनिमाइज हो जाता है और आप टाइम डीके को भी सिक्योर कर रहे हो. बट इफ यू आर बाइंग अ सिंपल कॉल ऑप्शन then you're hurting yourself क्योंकि टाइम डीके आपके अगेंस्ट वर्क करेगा. We are just into the second week of September and we have 2 weeks more for the expiry. So yes, this can be done for Reliance. Titan कोई पूछ रहा है बहुत टाइम से. I think आरती, okay please आप स्पैम मत करो नहीं तो अनुज वो हो जाएंगे आपसे अपसेट. So Titan, okay, Titan is overall positive. Gold का जो price है that's touched I think हमने देखा था कि last week ही काफी एक अच्छा रिकॉर्ड आया हुआ है और कल के सेशन में भी हमने देखा कि 2% और इंक्रीज हुआ था एक रिकॉर्ड हाई पे. US inflation data has also further added up to the expectations of gold rising. And of course हम एक seasonality wise sector में ऐसे घुस रहे हैं. हमारे पास नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, and then the wedding season is also coming. So overall सारे ही अगर हम चीजों को देखें तो gold related stocks are very positive. You can definitely buy for the next 3 to 4 months as well. अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हो, मोमेंटम अच्छा है यहाँ पे. बट अगर आप 3-4 महीने के लिए होल्ड भी करना चाहते हो तो भी टाइटन इज अ वेरी गुड स्टॉक. टाटा स्टील आई हैव ऑलरेडी गिवन द व्यू ऑन ऑल द मेटल. मुझे पता था आएगा ये क्वेश्चन. तो यस, there is some movement in sugar, so I'll just take that up. But guys ध्यान रखना sugar में there is a lot of volatility और ये क्या होता है, स्टॉक टेंड्स टू बी चलते चलते थक भी जाता है ये स्टॉक काफी. तो आप डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करना. देयर इज नो व्यू दैट वी आर हैविंग राइट नाउ फॉर दिस. Ma'am, Bajaj Finance for intraday.
ऑलराइट, बजाज वैसे भी अभी काफी न्यूज में है बिकॉज ऑफ द न्यू आईपीओ, बट लेट्स कम बैक टू बजाज फिनसर्व। यहाँ पे इंट्राडे में काफी एक अच्छा पुल बैक है 1850 के आसपास से, एंड इफ इट क्रॉसेस 1875 तब हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो 1875 विल बी योर कंडीशन price tick that you have to watch out for. Ma'am, data pattern bought at the rate of 2950. ओके, डेटा पैटर्न्स को देख लेते हैं। स्टॉक 2 महीने से नहीं चल रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके रिलेटेड काउंटर्स जो है वो थोड़े बहुत मूव कर रहे हैं, बट ये स्टॉक जो है वो बिल्कुल थक चुका है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एग्जिट के मौके ढूंढ लो, एंड अगर आपको यू नो ये जो आई नो सेटअप इज नॉट वेरी गुड, तो मैं आपको और कुछ एडवाइस भी नहीं कर पाऊंगी। आई थिंक यू शुड एग्जिट। Ma'am, Suzlon. Okay, Suzlon is one of the um, favorite stocks of traders, और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम भी है। इस वीक में हमने देखा है कि 10% स्टॉक चल चुका है, एंड द गुड पार्ट इज दैट इट इज होल्डिंग ऑन टू 80 लेवल्स। आप 80 के एक सपोर्ट को ध्यान रखो, एंड देन यू कैन प्ले इट आउट। टेक्निकली अगर हम बात करें प्योर टेक्निकल्स, द स्टॉक इज इन अ गुड अप ट्रेंड, एंड द मोमेंटम कैन कंटिन्यू। Ma'am, Zomato. Zomato is one of the favorite stocks, I think, of the recent times. मैंने एक रील में भी बोला था कि Zomato is looking very positive from the last 1 month, और हमने देखा है कि पिछले 1 महीने में स्टॉक जो है वो 15% से ऊपर रिटर्न्स दे चुका है। QSR स्पेस में दिस इज वन स्टॉक विच इज वेरी पॉजिटिव। अगर हम इसका फाइनेंशियल्स भी देखें तो भी इसमें काफी अच्छा एक डेटा एंड ऑल है। So overall stock is now getting ready for immediately 300, and then long term target हम 350 तक का expect कर सकते हैं इसमें। So you can be a trader and investor both in this stock, because definitely you can hold on. Ma'am, we on Angel One. सारे ब्रोकिंग काउंटर्स में ऑफ कोर्स एक डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर रहेगा, बट हम देख रहे हैं कि मोमेंटम थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, सो वी कैन वेट फॉर दी स्टॉक्स। ऑल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन डू इज लुक एट पीएससी, which is way better than the other stocks as of now. तो PSC में हम देख सकते हैं from the last consistently 4-5 weeks this stock has moved, and it's getting ready for 3200 levels. Tata Steel and Tata Motors. टाटा स्टील पे मैंने आपको ऑलरेडी व्यू दिया है। टाटा मोटर्स इज somewhat reviving, but I think आपको ऑटो में जाना ही है तो बजाज ऑटो को आप देख लो। I mean, which is way better, and volumes आप देखो यहाँ पे, it's just superb over here. So I think you should hold on to the better auto stocks. Auto definitely focus में है, but you have to be very selective with the stocks. Hero Motocorp. Yes. Hero. Okay. Hero Motocorp is also good. TVS Motor भी आप देख सकते हो टू व्हीलर स्पेस में अगर आपको देखना है। These two stocks are very good for two-wheeler space stocks, and good part is it is holding on. So कोई दिक्कत वाली बात नहीं है right now. And I just happened to overlook somebody's comment. Suneet is saying, shall we wait for the US markets Fed rate cut before investing in long-term stocks? So, guys, the best time to invest in market was actually 5 years back, COVID के time पे, COVID के low पे. But I feel the second best time is now, क्योंकि वो time तो निकल गया है.
और अब आपको फोमो होगा तो आप डेफिनेटली अभी वापस इन्वेस्ट कर सकते हो. The important thing is you have to be with the sectors or themes which are going to play out for the next 6 to 8 months. तो आपको एक long term smart view रखना पड़ेगा. Look at the themes which are going to play out. जैसे मैंने अभी आपको बोला wedding season आ रहा है with Diwali coming into onset. So you have to think on a very logical perspective. Gold के prices भी आपको देख रहे हो कि काफी एक higher zones पे आ रहा है. So these are the sectors or stocks that you should focus on. फिर auto में selective auto packs में काफी एक अच्छा movement है. You can look at some of the exchange related stocks like BSC काफी अच्छा है. So I feel अगर आपको एक stock specific अच्छा move मिल रहा है, so you should definitely not delay. राइट. ईवी या बैटरी ये सब भी काफी एक अच्छे थीम जो है प्ले आउट हो सकते हैं. सो ऑन ऑफ कोर्स traders can be little light on their position on that day जब वो फेड का रेट कट अनाउंसमेंट्स होगा और टू hedge their risk. पर अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो then you can definitely enter anytime. The markets are looking quite lucrative. सीमेंट की कुछ बात कर लेते हैं. एक्चुअली जेके सीमेंट इज व्हाट आई एम लाइकिंग द मोस्ट हियर. काफी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं सीमेंट पे, सो आई टेक दैट अप. सो जेके सीमेंट इज डेफिनेटली वन ऑफ द प्रेफर्ड पिक ओवर हियर. 48-50 तक के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. somebody has written Ramco cement in the comments. I'll just quickly look at the chart structure. यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है, अटक रहा है चार्ट. 850 पे एक हर्डल है, 850 क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक मोमेंटम बनेगा, और एल्स यू कैन जस्ट probably wait and watch. India Cement भी देख लेते हैं हम लगे हाथ. I can see Mayur asking. So India Cement is not something which I'm liking right now because काफी दिनों का consolidation है. Of course, the longer the consolidation, the longer is the breakout or breakdown. But हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है काफी 2 महीने से नहीं चला है. So I think there's a lot of opportunity cost here. So definitely JK Cement is one of the preferred pick out of the entire cement pack. So, ma'am, I think we are almost at the end of the session. We have initiated one strategy trade. Do we have any intraday for the day? Stock intraday. So for intraday, of course, Bajaj Auto is what I had mentioned, and National Aluminium, which is Narco, which is also looking quite positive. जो 190 के आसपास हम expect कर सकते हैं stock को. It was, I think, at 182 then we started discussing, but 180, 190 तक इसका targets expected है. Ma'am, what should be the stop loss for this? So we can put a stop loss at 177. Got it. Ma'am, anything else you would like to add before we end the session? This is actually it for the day. काफी एक अच्छा bulls have given us the momentum this week. और कल के session के बाद हम शायद ही कुछ बचा है बोलने को, but overall I think you should be invested in this kind of market. Overall trend is very positive, and be with sectors, be smart in your investment and trading. And of course आपके बहुत सारे messages भी आते हैं. I try to reply most of them. So yes, stay in touch, be invested, and stay smart in this bull market. Thank you, ma'am. Thank you, everyone, for joining in. We have initiated 2 trades. You can check the pinned messages or the comment section. आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. And don't forget to join our Sensex expiry, which is the last session for the week. So thank you, everyone. Thank you, ma'am. See you again next week.